Hello, students, and welcome to this fifth lecture of this diploma course in earthquake resistant building design. And in today's lecture, we're going to start the next chapter, chapter number 2, which is the seismic behavior of traditionally built constructions of India. So, as the name suggests, we're going to talk about the traditionally built constructions which are there in India. Traditionally built constructions means which are being constructed from a very long time, and they're using some basic materials like uh, like mud or basically stone and bricks, for example. They're not engineered; they are non-engineered structures, and they are using some basic construction methodologies and some local knowledge. They are not engineered by some professional, and so therefore they are susceptible to seismic damage. Okay, so इन structures जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं, अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया still lives in the traditionally built constructions. So obviously we need to study these structures and how we can improve on these structures, right? So what are the various modes of failure, how these structures are inefficient, how these structures should be improved upon, we are going to study in this particular chapter. So let's begin. So first topic in this chapter is earthquake effects. This is a basic introductory topic, basically, where we are discussing what are the various phenomenon that can happen in addition to the earthquake that happens on the surface of the earth. So the obvious thing, the first thing that happens is the direct shaking of the ground surface. Obviously the ground is going to shake, and all the structures that are built upon that surface, okay, are going to experience the shaking as well, due to which, if the structure is inadequate, अगर स्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है या फिर इनएफिशिएंट है या फिर उसमें उसका डिज़ाइन में कोई फ्लॉ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोलैप्स या फिर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज होने की संभावना हो जाएगी. So this is the first and most obvious effect, but there are some other additional effects that can also take place, like landslides, liquefaction of soil, tsunamis, and some gas lines also may get broken. So landslide is obvious because on some slopes the soil may be weak. All right, the soil may not be of very good quality, and it is prone to basically slipping off if some movement is there, if some if some shaking takes place. Okay, so that can take place. And liquefaction of soil, this concept you must have studied in your soil engineering course. If you have not, I will just give you a quick overview. So liquefaction is a phenomenon which takes place in loose sands, basically. लूज सैंड्स जो आपके होते हैं जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, दे आर नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड. ओके, इन सच सैंड्स, if there is the presence of water, okay, and sudden earthquake occurs, due to that there is a loss of effective stress, and effective stress, as you all know, is responsible for strength. This is something that you have studied in your soil engineering diploma course, and I'm not going to repeat this concept again. All we should know is that the strength the strength of any soil is dependent on the effective stress, and due to the sudden shaking of the soil, that effective stress becomes zero. Suddenly it becomes zero, and the soil behaves like a liquid. It will just flow down, and the structure which is resting on that soil will also collapse. So this phenomenon is known as liquefaction of soil. Okay, occurs in loose sands. If you have not studied it in soil engineering, I've just given you a brief overview. Okay. Next are tsunamis. We have discussed how tsunamis can occur due to earthquakes, and some gas lines if there are present. Okay, gas lines हमारे बेसिकली जो हाउस सप्लाईज के लिए बेसिकली आपकी एलपीजी की गैस लाइंस होती हैं, या दे माइट बी अदर इंडस्ट्रियल गैस लाइंस ऑल्सो. So because of the shaking of the ground, these gas lines can also get broken, and which can lead to some fire, or it can be very catastrophic, or direct inhalation of that gas may be detrimental to the health of the people. So these are the some general earthquake effects that can take place. Now let's move on to the next topic.
The next topic, this is a scanned page from your textbook. The traditionally built construction of India. We're going to discuss what we actually mean by traditionally built constructions. So, traditionally built constructions are the structures which are typically made out of bricks, stones, mud, or the combination of these materials. So, these are the materials which are used. Bricks हो सकते हैं, stones, mud. In some cases, wood and bamboos are also used. So these are basically components or basically materials which are not as strong as the present day materials that we're using, RCC and steel. So because of the inferiority of the materials used, okay, and also because of the fact that these constructions are made by inexperienced and locally available masons. ठीक है, ये लोकल अवेलेबल जो आपके पास मेसन्स होंगे वही इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिनके पास कोई इंजीनियर्ड सॉरी एक प्री डिफाइंड एक उनके पास बेसिकली मैकेनिज्म होता है जिसको हर एक बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं, किसी अलग स्ट्रक्चर के लिए, किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए वो कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं अप्लाई करते हैं. सो दीज स्ट्रक्चर्स इसमें कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल को आपने एम्प्लॉय नहीं किया है. दीज आर नोन एज नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स एंड बिकॉज ऑफ दीज shortcomings that we discussed, these structures are prone to structural damage as well as collapse due to the earthquake effects. Okay, so these structures, if they get collapsed, and what are the main reasons due to which they can get collapsed? We have mentioned some reasons over here. These are very important points. These structures can get collapsed due to very poor tensile strength of the material used and their heavy mass. Okay, पहली बात तो जब हमने मटेरियल यूज़ किया उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी है. ऑल ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड, bricks, stones, mud, these are good in compression, no doubt. If the earthquake does not happen, these structures will last. Alright, they will not collapse due to any simple reason. But these structures, all these components have very low tensile strength. We've discussed in your construction materials course in third semester that bricks and stones and even concrete, these materials are strong in compression, but in tension their strength it reduces to almost 1/10. So because there is no steel there, okay, there is no RCC used, therefore they are weak in tension, and because of the poor tensile strength these structures can fail, and also because they are heavy in weight. Okay, now this is a very important point in terms of seismic performance of any structure. कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको सीस्मिकली इफेक्टिव बनाना है, बेसिकली अगर वो अर्थक्वेक की फोर्सेस को ले पाने में सक्षम अगर आपने इसको बनाना है तो उसका मास कम से कम होना चाहिए, बिकॉज अर्थक्वेक फोर्सेस डायरेक्टली मास पे डिपेंड करती है. अगर मास ज़्यादा होगा आपके स्ट्रक्चर का तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फोर्सेस को भी अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, जितना ज़्यादा उसका मास होगा या फिर जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगी. दिस इज न्यूटन्स लॉ. ओके, more is the mass, more is the inertia, and more acceleration will be developed due to the lateral forces which are going to occur because of the earthquake, and therefore this structure which has heavy mass is prone to get collapsed or damaged. Okay, so this was the second point. First was poor tensile strength, second is the heavy mass, and third point we are going to talk about the connections. See, the connections might not be strong as well as ductile. कौन से कनेक्शंस की बात कर रहे हैं? देखो, वेरियस यूनिट्स होते हैं बिल्डिंग में, आपके मेसनरी वॉल्स हैं, रूफ्स हैं और फाउंडेशन सिस्टम्स है बेसिकली आपके पास. तो ये तीन सिस्टम्स आपके पास जो बिल्डिंग के हैं, लेट मी जस्ट ओके, सो मेसनरी वॉल्स, रूफ कंपोनेंट्स और फाउंडेशन सिस्टम, इनके बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है. नाउ इन एन आरसीसी स्ट्रक्चर दिस कनेक्शन इज एंश्योर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर रीइंफोर्समेंट एंड लिंक्स. ठीक है, बट जो आपकी नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने सरिये का इस्तेमाल नहीं किया बेसिकली, वहाँ पे इन कनेक्शंस का बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी मुश्किल है. और जब अर्थक्वेक आएगा ये कनेक्शन ही पहले ब्रेक होंगे, एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दीज कनेक्शंस आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से फिर बिहेव करेंगे. मीन्स आपकी वॉल्स अगर रूफ से अलग होगी और वही वॉल्स आपके फाउंडेशन से अलग होगी, देन दीज थ्री कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. ठीक है, एक स्टेटमेंट थी यूनिटी इज स्ट्रेंथ. इफ ऑल दीज कंपोनेंट्स आर यूनाइटेड, एक साथ अगर ये कनेक्टेड हैं तो ये फोर्सेस को इक्वली फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उस अर्थक्वेक को
bear कर सकते हैं. But now since the connections are broken, all of these components have gone apart, and now they cannot effectively manage the forces that are going to come on them. So connections should always be strong, and also there needs to be ductility. ये बहुत ही important property है. Remember this. All the earthquake resistant structures need to have a very important property which is ductility. ठीक है, स्ट्रक्चर में भी डक्टिलिटी चाहिए और कनेक्शंस में भी डक्टिलिटी चाहिए. ठीक है, डक्टिलिटी हमें पता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अंडरगो लॉन्ग डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर. ठीक है, प्लास्टिक रीजन में जो आपका डिफॉर्मेशन होती है, दैट स्ट्रेन दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इन एनी मटेरियल इन द प्लास्टिक रीजन इज नोन एज योर डक्टिलिटी. इसका ऑपोजिट क्या था? ब्रिटलनेस. ओके, अगर कनेक्शन डक्टाइल नहीं होगा तो कैसा होगा? डेफिनेटली ब्रिटल होगा. अब ब्रिटल कनेक्शन का क्या मतलब है? जैसे अर्थक्वेक फोर्सेज आएंगी, आपका जो कनेक्शन है वो ब्रिटल होने के कारण जल्दी टूट जाएगा. एंड इफ दैट कनेक्शन ब्रेक्स, वही बात हो जाएगी, आपके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे और डिफरेंटली बिहेव करेंगे, वो फोर्सेस को नहीं ले पाएंगे ठीक से. बट इफ़ द कनेक्शंस आर डक्टाइल, अब इसमें क्या होगा? कि कनेक्शंस डक्टाइल हैं, फोर्सेस अगर ज़्यादा आ भी गई, अगर वो कनेक्शंस आपके प्लास्टिक रीजन में चले गए, यील्ड करके कनेक्शंस अगर आपके, तो वो कोलैप्स नहीं करेंगे, वो कनेक्शन टूटेंगे नहीं, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे और इमीजिएटली आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, विच गिव्स द स्ट्रक्चर सम टाइम. स्ट्रक्चर को कुछ टाइम मिलेगा बिफोर इट कैन totally collapse, or the connections can totally break off. So ductility is a very important property of any earthquake resistant building, and strong तो होने चाहिए बेसिकली कनेक्शन आपका. सो ये बेसिकली शॉर्ट कमिंग्स है आपकी ट्रेडिशनली बिल्ट कंस्ट्रक्शन इन इंडिया की. और about 90% of the population still lives in such structures, so you can imagine how much important it is for us to properly design such structures and to retrofit or repair such structures. All right, so now we're going to discuss some advantages and disadvantages of the masonry buildings. So you can see there are some advantages that are mentioned over here. So first of all, environmental conditions के लिए ये काफ़ी weather resistant है, क्योंकि materials which are used over here, if they are of good quality, they can easily resist any type of environmental condition. Also इसमें जो space है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है टू अकोमोडेट इट सेल्फ. बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास स्पेस की कमी नहीं होती है. यू कैन हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस इफ़ यू आर यूजिंग दीज मटेरियल्स. ऑल्सो इनिशियल कॉस्ट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो स्टील इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट दीज मटेरियल्स आर वेरी चीपली मैन्युफैक्चर्ड एंड ईजिली अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो इनिशियल कॉस्ट भी इकोनॉमिकल है, और यही रीज़न है कि आज भी 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस ट्रेडिशनली बिल्ट कंस्ट्रक्शन में रह रही है, हालांकि इट इज़ नॉट सेफ. ओके, सो ऑल्सो रिपेयर्स कैन बी डन ईजिली. कोई भी अमेंडमेंट अगर आपने करना है, इसमें चेंजेस लाने हैं, वो भी कर सकते हैं. और ये मटेरियल्स आपके काफ़ी फायर रेजिस्टेंट होते हैं. एंड अगेन कोई भी रॉट्स, मोल्ड, फंगस अगर आते हैं उसके अगेंस्ट ये सेफ होते हैं. और मेसनरी बिल्डिंग्स हाई क्वालिटी होती हैं और लो मेंटेनेंस होती हैं. ठीक है, इनमें मेंटेनेंस भी कम लगता है इफ़ योर कंस्ट्रक्शन इज़ प्रॉपर. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेजर है. सो लेट्स डिस्कस दोज नाउ. So material used in the masonry buildings need to be stored on site and protected from weather before these are utilized in the buildings. Definitely masonry building में जो आपके materials है वो site पे store किए जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस स्टोरिंग प्रोसेस अगर आपने ठीक से नहीं आपने इनको प्रोटेक्ट किया है वेदर से, तो डेफिनेटली आपका जो मटेरियल की क्वालिटी है वो डिटेरिएट हो सकती है. और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फिर आप उनको यूज़ करेंगे अगर, तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. और ये लेबर इंटेंसिव है, तो डेफिनेटली अगर आपने ब्रिक बाय ब्रिक वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है या फाउंडेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव. काफ़ी ज़्यादा आपको लेबर की इसमें कॉस्ट पड़ सकती है. ओके, एंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन शोज़ लो सीस्मिक एफिशिएंसी. ठीक है, सीस्मिक एफिशिएंसी कम है. क्या रीज़न है सीस्मिक एफिशिएंसी कम होने के? हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था. ओके, एंड ब्रिक हाउसेज आर बिल्ट बाय हैंड वन आफ्टर द ब्रिक, सो दिस टेक्स लॉन्ग आवर्स, इस कंस्ट्रक्शन इज़ एक्सपेंसिव. ठीक है, ये वही पॉइंट है बेसिकली. सेकंड पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे अगेन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. बेसिकली ये सेम ही बात है, लेबर इंटेंसिव काम है तो एक्सपेंसिव बेसिकली आपको ये पड़ जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज इट हैज़ लो सीस्मिक एफिशिएंसी.
ठीक है, हमारे इस टॉपिक इस बेसिकली इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इसकी डिसएडवांटेज है, ये मेजर डिसएडवांटेज है. वी कैनॉट हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन अ सीस्मिकली एक्टिव जोन. ठीक है, आपके जोन 4 जोन 5 में जो भी ऐसी कंस्ट्रक्शन है, नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन, दीज आर वेरी वेरी प्रोन टू डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक्स. ओके, now let us discuss the next topic, the behavior of masonry constructions during earthquakes. सो अर्थक्वेक्स के दौरान ये आपकी मेसनरी या फिर नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स किस तरह बिहेव करते हैं, लेट अस हैव अ लुक. तो देखो, वॉल्स आपकी प्रॉपरली यूनाइटेड नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी स्टील लिंक और द प्रेजेंस ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट्स. क्योंकि ये प्रॉपरली यूनाइटेड नहीं होंगी, देयरफॉर दे विल नॉट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे स्ट्रक्चर का एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करना इंपॉर्टेंट है व्हेन अर्थक्वेक कम्स. ओके, बिकॉज यूनाइटेड ऑल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अगर सारे वो यूनाइटेड हैं तो वो अर्थक्वेक फोर्सेस को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बिल्डिंग एज अ होल सेफ रहेगी अगेंस्ट कोलैप्स और डैमेज. बट इफ़ ईच कंपोनेंट इट अगर वो सेपरेट हो जाएगा, then it will not be able to take the forces as compared to if all those structures were combined together. So connections एक बहुत बड़ा problem है आपके इन structures में. So connection can get broken when an earthquake comes, and especially your corner connections, because they do not behave very nicely when earthquake happens. तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे अगेन इन्होंने लिखा है, कॉर्नर कनेक्शन मीन्स आपके वॉल्स पे जो कॉर्नर्स हैं, एक वॉल जो सेकंड वॉल से कनेक्टेड है उस कनेक्शन की हमें बात हो रही है. योर डिफरेंट वॉल्स विच आर मीटिंग एट द कॉर्नर्स, दे कैन गेट डिसकनेक्टेड एंड दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक. एंड देयर आर कनेक्शंस विद रूफ्स एंड ऑल्सो वॉल्स. And due to this breaking of the connections between roof and walls, now you can imagine that your roof will behave differently. And the roof, just imagine if the roof is behaving differently, the roof, because of the lateral forces, can get displaced. क्योंकि रूफ सबसे टॉप पे आपका एक कंपोनेंट है, एंड जितना हाइट पे आपका कोई भी कंपोनेंट है उतना ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन बेसिकली एक्ट करेगी, and that component, the roof, can basically fall off, and that can be detrimental to the structure. And the openings for doors and windows are also not proportioned with respect to the size of the wall, and leading to unsatisfactory strength, behaves poorly. कुछ ग्रामर यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है. ओके, यहाँ पे poorly आना था. behaves poorly and shows poor performance during the earthquakes. सी आपकी जो वॉल्स में ओपनिंग्स है बेसिकली उनके बारे में बताया गया है. आपकी जो डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग्स है, दे शुड नॉट बी वेरी मच लार्ज. अ रूल ऑफ थंब इज़ दैट कि 1/3 जो आपका वॉल का एरिया है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग्स इफ़ योर स्ट्रक्चर इज़ अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. बेसिकली आपकी वॉल्स अगर लोड ले रही है ना, देखो ट्रेडिशनल बिल्ड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई भी आपने आरसीसी की बीम्स या कॉलम्स नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्स आपके पास हैं जो आपने स्टोन या ब्रिक से बनाई हैं वो लोड भी ले रही हैं. ओके, सो इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में आपने ओपनिंग्स कम से कम रखनी है. इफ़ द डोर्स एंड विंडोज आर मोर एंड दे आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ओके, देन बेसिकली इन ओपनिंग्स के कारण आपने वॉल की स्ट्रेंथ को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है. वर्टिकल लोड तो वो ले लेंगी, बट इफ़ देयर इज़ अ लेटरल लोड विच कैन कम ड्यू टू एन अर्थक्वेक, these units will not behave satisfactorily and poor performance can be noticed during an earthquake. So openings ज़्यादा नहीं होनी चाहिए basically. And यहाँ पे concept बताया गया कि bricks, since bricks are used as load bearing structures, they should be more stronger than mortar. ठीक है, आपके मेसनरी में आप ब्रिक्स एंड मोटार का एक बेसिकली कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी दीवार को खड़ा करते हैं. But you have to remember that mortar should always be weaker as compared to bricks if these are load bearing structures especially. See, because bricks are the main units. Brick main unit है और mortar तो सिर्फ उनको bond करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. If mortar is more stronger than the brick will collapse, brick will break if there is a sudden earthquake that has happened.
ब्रिक विल कोलैप्स, एंड अगर आपका मेन यूनिट ही कोलैप्स कर गया देन आपका पूरी वॉल जो है वो कोलैप्स कर जाएगी. बट इफ़ मोटार कोलैप्सेस, अगर मोटार आपका क्रैक होना शुरू होता है तो ब्रिक्स कैन स्टिल टेक सम अमाउंट ऑफ द लोड, क्योंकि मेन यूनिट तो ब्रिक ही है. एंड ऑल्सो बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट रिपेयर्स एंड स्टफ, तो रिपेयर भी बेसिकली अगर मोटार आपका डैमेज हुआ है तो वहाँ पे रिपेयर आपको करना ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने ब्रिक्स को रिप्लेस करना पड़े. सो ऑलवेज रिमेंबर, bricks should be more stronger than mortar. So these are the typical behaviors that masonry constructions they display during earthquake, and these have been noticed in recent years when your earthquakes like the one in Latur in 93, Jabalpur earthquake of 97, Chamoli Uttarakhand earthquake of 99, and the most recent one which was in Bhuj, Gujarat, which was a catastrophic event. It led to the loss of life of around 14,000 people. और उस रीजन में, भुज के रीजन में काफ़ी ज़्यादा आपके पास ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर्स थे वो मौजूद थे. Especially after this event, the engineers, they started shifting their attentions a lot towards these traditional built constructions and how they can be improved upon, and how the loss of life can be prevented in further such events.